रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरण मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरण वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा के एपिसोड नंबर 274 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Published by गीता प्रेस गोरखपुर। अब तक हमने देखा कि हनुमान जी ने लंका से छलांग लगा दी है, सीता जी से उन्होंने मिल लिया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि आप चिंता न करें, राम भगवान तुरंत ही आपकी सेवा में हाजिर होंगे, तुरंत ही आपका उद्धार करने के लिए पधारेंगे। इतना विश्वास दिला के वहाँ से निकल दिए हैं और प्रस्थवर्णगिरी पर्वत पूरा जमीन में धंस गया है। ऐसी जोरदार छलांग हनुमान जी ने लगाई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है सुंदरकांड में। शुरू करते हैं आज का एपिसोड लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी का समुद्र का लंघन, समुद्र को लांघ कर जामवानों और अंगद आदि सूरजों से मिलना। 57 सर्ग Canto 57 having leapt from the coast of Lanka and touching the Mainak mountain which he come across in the way, nay advancing further, Hanuman roars at the top of the voice at the sight of the Mahendra mountain in order to bring joy to the monkeys awaiting his return. देखिए सारे वानर वहाँ उनकी राह देख रहे थे। Jamwan tell the monkeys who got up impetuously on hearing the roar that Hanuman has returned successful from his expedition, as was evident from his jubilant roar, having greeted Jamwan and others on alighting on the summit of the Mahendra mountain. Hanuman narrates to them in a nutshell the story of his discovery of Sita, applauding Hanuman Prince Angad, who was angered to hear the story. Sita sits down to do so on an extensive flat rock along with all. तो सब सुनने के लिए हनुमान जी क्या हुआ सब उनके आसपास ऐसे जुड़ जाते हैं। हनुमान जी इतने खुश है और जामवान को पता चल गया है कि हनुमान जी ने काम सक्सेसफुल कर दिया है। पंखधारी पर्वत के समान महान वेगशाली हनुमान जी बिना थके मदे उस सुंदर एवं रमणीय आकाश रूपी समुद्र को पार करने लगे, जिसमें नाग, यक्ष, गंधर्व खिले हुए कमल और उत्पल के समान थे। चंद्रमा, कुमुद और सूर्य जल कुकुट के समान थे। पुष्य और श्रवण नक्षत्र, कल हंस तथा बादल सेवर और घास के तुल्य थे।
पुनर्वसु विशाल मत्स्य और मंगल बड़े भारी ग्राह के से सदृश थे। ऐरावत हाथी वहाँ महान द्वीप सा प्रतीत होता था। वह आकाश रूपी समुद्र स्वाति रूपी हंस के विलास से सुशोभित था तथा वायु समूह रूप तरंगों और चंद्रमा की किरण रूप शीतल जल से भरा हुआ था। कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन। Bounding with great impetuosity, Hanuman, who looked like a winged mountain and never felt exhausted, sailed across the firmament, which presented the appearance of a delightful and charming ocean, graced with a swan in the form of the constellation Swati, with the Nagas, Yaksha, and the Gandharvas gathered together there for its full-blown lotus and water lilies, the moon for a white water lily, the sun for a waterfall, the constellation known by the name of Pushya, and the Sravana for swans, the clouds for his duck weeds and grassy spot adjoining the shores, the twin constellations of Punarvashu for its large fish, the planet Mars for a large alligator, Arrivat the elephant carrying Indra on its back for a large island, the gales for its billows, and the moonbeams for its cool water. हनुमान जी आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए, चंद्रमंडल को नखों से खरोचते हुए, नक्षत्रों तथा सूर्यमंडल सहित अंतरिक्ष को समेटते हुए, बादलों के समूह को खींचते हुए से अनायास ही अपार महासागर के पार चले जा रहे थे। As though swallowing up the space, sketching the moon, the lord of the stars, seizing the heavens along with their lunar mansions, and the solar orb, and drawing the masses of clouds apart, Hanuman unweariedly sailed over the boundless sea. उस समय आसमान में सफ़ेद, लाल, नीले, मजीद के रंग के, हरे और अरुण वर्ण के बड़े बड़े मेघ शोभा पा रहे थे। ह्यूज क्लाउड्स, वाइट रोसेट, ब्लू मैडर लाइक ग्रीन एंड डार्क इन कलर, मेड देयर अपीयरेंस इन द स्काई। वे कभी उन मेघ समूहों में प्रवेश करते और कभी बाहर निकलते थे। बारंबार ऐसा करते हुए हनुमान जी छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। Penetrating deep into the mass of the clouds and emerging from them again and again, Hanuman looked like the moon, becoming invisible and visible again. नाना प्रकार के मेघों की घटाओं के भीतर होकर जाते हुए धवलांबरधारी वीरवर हनुमान जी का शरीर कभी दिखता था और कभी अदृश्य हो जाता था। अतः वे आकाश में बादलों की आड़ में छिपते और प्रकाशित होते चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। Having found his way into the various masses of the clouds and emerging again his person, accordingly becoming visible and invisible, the hero Hanuman, who was clad in white, thereby shone like the moon in the sky. बारंबार मेघ समूह को विदीर्ण करने और उनमें होकर निकलने के कारण वे पवन कुमार हनुमान आकाश में गरुड़ के समान प्रतीत होते थे। Emerging again and again, tearing asunder the masses of clouds, the delight of the wind god looked like a Garuda in the sky. इस प्रकार महातेजस्वी हनुमान
अपने महान सिंहनाद से मेघों की गंभीर गर्जना को भी मात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे प्रमुख राक्षसों को मारकर अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके थे। बड़े बड़े वीरों को रौंदकर उन्होंने लंका नगरी को व्याकुल तथा रावण को व्यथित कर दिया था। तत्पश्चात विदेह नंदिनी सीता को नमस्कार करके वे चले और तीव्र गति से पुनः समुद्र के मध्य भाग में आ पहुंचे थे। वहां पर्वतराज सुनाब मैनाक का स्पर्श करके वे पराक्रमी एवं महान वेगशाली वानर वीर धनुष से छूटे हुए बाण की भांति आगे बढ़ने लगे। उत्तर तट के कुछ निकट पहुंचने पर महागिरी महेंद्र पर्वत पर दृष्टि पड़ते ही उन महाकपि ने मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उस समय मेघ की भांति गंभीर स्वर से वो बड़ी भारी गर्जना करके उन वानरवीर ने सब ओर से दसों दिशाओं को कोलाहल पूर्ण कर दिया था। फिर वे अपने मित्रों को देखने के लिए उत्सुक होकर उनके विश्राम स्थान की ओर बढ़े और पूंछ हिलाने एवं जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। जहाँ गरुड़ चलते हैं उसी मार्ग पर बारंबार सिंहनाद करते हुए हनुमान जी के गंभीर घोष से सूर्यमंडल सहित आकाश मानो फटा जा रहा था। उस समय वायुपुत्र हनुमान जी के दर्शन की इच्छा से जो सुरवीर महाबली वानर समुद्र के उत्तर तट पर पहले से ही बैठे थे, उन्होंने वायु से टकराए हुए महान मेघ की गर्जना के समान हनुमान जी का जोर जोर से सिंहनाद सुना। Having dispatched the eminent ogres and thereby made his name widely known, created a stir in the city of Lanka and caused agony of Ravana, killed eminent heroes among the ogres and greeted Sita, a princess of the Videha territory. Hanuman, endowed with extraordinary energy, whose roar resembled a peal of thunder, once more reached the middle of the sea, thundering with a great roar, nay, having duly touched the Sunaba Mainaka mountain, the lord of the mountain, the powerful Hanuman, who was full of great impetuosity, sped on like an arrow discharged from a bowstring, having arrived a bit near and observing Mahendra, the great mountain, that mighty monkey thundered like a cloud, emitting a roar, the aforesaid monkey, whose loud cry resembled the rumbling of a cloud, filled all the 10 directions completely with his roar. Arrived in the region where his companion were waiting for him, Hanuman, who was panting to see his friends, gave out a very loud cry and waved his tail. The firmament with the solar orb began to crack, as it were due to his roar, even as he repeatedly roared on the path, followed by Garuda endowed with her beautiful wings. Those heroes endowed with extraordinary might, who stood already on the aforesaid northern shore of the sea, angered to see Hanuman, heard at that time the sound produced by swapping motion of Hanuman's thigh, which resembled the rumbling of a huge cloud propelled by the wind. अनिष्ट की आशंका से जिनके मन में दीनता छा गई थी, उन समस्त वनवासी वानरों ने उन वानर श्रेष्ठ हनुमान जी का मेघ गणना के समान सिंहनाद सुना. All those monkeys who were feeling distress in mind due to anxiety on the score of Hanuman heard the thunder-like roar of Hanuman. गरजते हुए पवन कुमार का वह सिंहनाद सुनकर सब और बैठे हुए वे समस्त वानर अपने सूरज हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्कंठित हो गए.
Hearing the roar of Hanuman, who was emitting a loud cry, all the aforesaid monkeys on all sides become full of longing anger as they were to see their comrade. सूरद यानी कॉमरेड। वानर भालुओं में श्रेष्ठ जामवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से खिल उठे और सब वानरों को निकट बुलाकर इस प्रकार बोले, इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। कृत कार्य हुए बिना इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती है। Addressing all the monkeys present there, Jamwan, the foremost of monkeys and bears, who felt enraptured at heart with joy, spoke as follows. They yonder Hanuman has been wholly successful. There is no doubt about it, for had he been unsuccessful, his roar would not have been of this type. महात्मा हनुमान जी की भुजाओं और जांदों का महान वेग देख तथा उनका सीनाद सुन सभी वानर हर्ष से भरकर इधर उधर उछलने कूदने लगे। Feeling overjoyed, they sprang from tree top to tree top and from peak to peak, anger as they were to behold Hanuman. हनुमान जी को देखने की इच्छा से वे प्रसन्नतापूर्वक एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर चढ़ने लगे। हम भी कभी देखते हैं कि वानर भी ऐसे उछलते कूदते हैं, जब कुछ नया देखते हैं तो ऐसा अनुभव होता है। Feeling overjoyed, standing on top, tree top, seizing the boat, last they should topple down while gazing upward, they joyously waved their splendid raiment. वृक्षों की सबसे ऊंची शाखा पर खड़े होकर वे प्रीतियुक्त वानर अपने स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। Standing on the tree top, seizing the boat, last they should topple down while gazing upward, they joyously waved their splendid raiment. जैसे पर्वत की गुफाओं में अवरुद्ध हुई वायु बड़े जोर से शब्द करती है, उसी प्रकार बलवान पवन कुमार हनुमान जी ने गर्जना की। The mighty Hanuman sprung from the lions of the wind god, roared even as the wind pant up in a mountain carven wood. मेघों की घटा के समान पास आते हुए महाकपि हनुमान को देखकर वे सब वानर उस समय हाथ जोड़कर खड़े हो गए। Seeing that huge monkey rushing like a mass of clouds, at that moment all the aforesaid monkeys stood with joined palms. तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल शरीर वाले वेगशाली वीर वानर हनुमान, जो अरिष्ट पर्वत से उछल कर चले थे, वृक्षों से भरे हुए महेंद्र गिरी के शिखर पर कूद पड़े। Having leapt from the Arist mountain in Lanka, the heroic Hanuman, for his part, who was full of impetuosity and looked like a mountain himself, descended on the top of the mountain Mahendra, thick with trees. हर्ष से भरे हुए हनुमान जी पर्वत के रमणीय झरने के निकट पंख फटे हुए पर्वत के समान आकाश से नीचे आ गए। Overflowing with joy, he alighted on the brink of a lovely mountain, like a mountain whose pinions have been clipped
descending from the heavens. उस समय वे सभी श्रेष्ठ वानर प्रसन्नचित हो महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए. Delighted at heart, all those dwell among the monkeys thereupon stood and circled the high-souled Hanuman. उन्हें घेर कर खड़े होने से उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई. वे सब वानर प्रसन्न मुख होकर तुरंत आए हुए पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के पास भांति भांति की भेंट सामग्री तथा फल मूल लेकर आए और उनका स्वागत सत्कार करने लगे. Gathering round him, they all derived supreme joy, nay, with an exceedingly cheerful countenance, they all approached Hanuman, who had just arrived. Taking present in the form of roots and fruits, the monkeys honored Hanuman, the foremost among monkeys. कोई आनंद मग्न होकर गरजने लगे, कोई किलकारियाँ भरने लगे और कितने ही श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर हनुमान जी के बैठने के लिए वृक्षों की शाखाएं तोड़ लाए. Some roared in sheer delight, others likewise raised shouts of felicity, full of joy. Others dwelt among the monkeys, brought boughs of trees for Hanuman on seat to sit on. महाकपि हनुमान जी ने जामवान आदि वृद्ध गुरुजनों तथा कुमार अंगद को प्रणाम किया. The great monkey Hanuman, for his part, saluted at that moment his elder as well as the Angad, the foremost of whom was Jamvan, as also Prince Angada. फिर जामवान और अंगद ने भी आदरणीय हनुमान जी का आदर सत्कार किया तथा दूसरे दूसरे वानरों ने भी उनका सम्मान करके उनको संतुष्ट किया. तत्पश्चात उन पराक्रमी वानरवीर ने संक्षेप में निवेदन किया, मुझे सीता देवी का दर्शन हो गया है. देखिए हनुमान जी खुश हो गए. उन्होंने पहला ही वाक्य बोल दिया, मुझे सीता देवी का दर्शन हो गया है. Honored by the two with Jamvan and Angad, the propitiated by the other monkeys, the valiant Hanuman, who merited such honorable welcome, submitted in brief that the godlike lady has been seen by him. तदंतर वाली कुमार अंगद का हाथ अपने हाथ में लेकर हनुमान जी महेंद्रगिरी के रमणीय वन प्रांत में जा बैठे और सबके पूछने पर उन वानर शिरोमणियों से इस प्रकार बोले, जनक नंदिनी सीता लंका के अशोक वन में निवास करती हैं, वही मैंने उनका दर्शन किया है. Nay, taking Angad, Wali's son, by the hand, he then sat down in a lovely part of the woodland on the Mahendra mountain. अत्यंत भयंकर आकार वाली राक्षसियां उनकी रखवाली करती है. साध्वी सीता बड़ी भोली भाली हैं, वे एक वेणी धारण किए वहाँ रहती हैं और श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक है. उपवास के कारण बहुत थक गई हैं, दुर्बल और मलिन हो रही हैं तथा उनके केस जटा के रूप में परिणत हो गए हैं. उस समय सीता जी का दर्शन हो गया. वह वचन वानरों को अमृत के समान प्रतीत हुआ. यह उनके महान प्रयोजन की सिद्धि का सूचक था. हनुमान जी के मुख में यह शुभ संवाद सुनकर सब वानर बड़े प्रसन्न हुए. कोई हर्षनाद और कोई सीनाद करने लगे. दूसरे महाबली वानर गर्जने लगे. कितने ही
किलकारियाँ भरने लगे और दूसरे वानर एक की गर्जना के उस उत्तर में स्वयं भी गर्जना करने लगे। बहुत से कपिकुंजर हर्ष से उल्लासित हो पूंछ ऊपर उठाकर नाचने लगे। कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूंछ घुमाने या हिलाने लगे। कितने ही वानर हर्षोल्लास से भरकर छलांगे मारते हुए पर्वत शिखर पर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान को छूने लगे। हनुमान जी की उपयुक्त बात सुनकर अंगद ने उस समय समस्त वानर वीरों के बीच में यह परम उत्तम बात कही, वानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारा सामना कोई नहीं है, समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघकर फिर इस पार लौट आए हो। कपि शिरोमणे, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। Inquired by them, Hanuman then told those dwell among the monkeys that Sita, Janak's daughter, had been seen by him dwelling in the Asoka groves, that the young lady who was beyond reproach was being guarded by exceedingly dreadful ogres who wore a single plate of his as a mark of desolation, and cited for Sri Ram's sight, and that she had been thoroughly worn out through fasting, wore matted locks, and was emaciated and stained with dust. All the monkeys thereupon felt rejoiced to hear the nectar-like report, देखिए अमृत के समान, of Hanuman to the effect that Sita had been seen by him, which was full of great significance. Some roared, some roared like lions, others raised jubilant trees, while still other monkeys who were endowed with extraordinary might bellowed like bulls. Other again raised shouts expressive of joy, while yet other roared in return with their tails lifted up. Some elephant-like monkeys who felt overjoyed waved their thick, long, crueled tails, bounding from the peaks of the mountain full of joy. Other, for their part, embraced the glorious Hanuman, the foremost of a monkey, in the midst of all monkeys. Herds Angad for his part then paid the following most excellent compliment to Hanuman, who had spoken as above. No one stand equal to you, O Hanuman, in courage of valor, since having leapt across the extensive sea, you have come back. You are the sole life giver to us, O dwell among the monkeys. अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता देवी का दर्शन कर आए हो। अब भगवान श्री राम सीता के वियोग से उत्पन्न हुए शोक को त्याग देंगे, यह भी सौभाग्य का ही विषय है। Through your grace alone shall we be united with Sri Ram, a season of Raghu, for purpose in the slope shape of Sita's discovery, having been accomplished, wonderful in your devotions
to your master. Amazing is your valor and marvelous your firmness. Luckily has the godlike and illustrious consort of Sri Ram been seen by you, and luckily will Sri Ram, a season of Kakutsa, shared his grief born of separation from Sita. तत्पश्चात सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र लंघन, लंका, रावण एवं सीता जी का दर्शन समाचार सुनने के लिए एकत्र हो गए तथा अंगद, हनुमान और जामवान की चारों ओर से घेर कर पर्वत की बड़ी बड़ी शिलाओं के आनंद पूर्वक बैठे गए। वे सब के सब हाथ जोड़े हुए थे और उन सब की आंखें हनुमान जी के मुख पर लगी थी। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में देवताओं द्वारा सेवित होकर बैठते हैं, उसी प्रकार बहुत से वानर वीर से घिरे हुए श्रीमान अंगद वहाँ बीच में विराजमान हुए। कीर्तिमान एवं यशस्वी हनुमान जी तथा बाहों में भुजबंद धारण किए अंगद के प्रसन्नतापूर्वक बैठने से वह ऊंचा एवं महान पर्वत शिखर दिव्य क्रांति से प्रकाशित हो उठा। Surrounding Angad, Hanuman and Jamvan, and full of great joy, monkey thereupon bellowed themselves to extensive rocks, seated on the extensive rocks of that mountain, eager as they were to hear how Hanuman was able to leap across the sea and see Lanka, Sita and Ravana. All those who dwell among the monkeys waited with joined palms, their faces turned forwards Hanuman. The glorious Angad sat there encircled by numerous monkeys, even like Indra, the lord of the gods, waited upon by gods in heavens. Full of joy at that time, the glorious Hanuman as well as the illustrious Angad, who had his arms adorned with a pair of armlets and lofty and huge mountain peak, suited, illuminated with splendor. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे सप्तपंचाशः सर्गः, the end Canto 57 of the Sundarakānda in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Namah Parvati Pataye. Har Har Mahadev Har. Siya Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Siya Ram Jaya Jaya Siya Ram. Raghupati Raghav Raja Ram पतित पावन श्री राम जय जय राम श्री राम जय पति राघव Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. Thanks for watching again. Thank you. Jai Sri Ram.